Welcome student in sixth session from your textbook chapter number 14 sources of energy. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the solar energy. In that we study solar cooker and solar cell. So today we are going to discuss the energy from the sea. Okay. So the energy from the sea can be obtained mainly in three forms: tidal energy, wave energy and ocean thermal energy. Okay. So we will study in this only tidal energy. Clear this one? So the rise of the sea water due to gravitational pull. The rise of the sea water due to gravitational pull of the moon is called the high tide, whereas the fall of the sea water is called the low tide. So the tidal waves in the sea build up and recede, means rise and fall, so twice a day. Okay, so the enormous movement of water between the high tides and low tides provides a very large source of energy in the coastal areas of the world. So the tidal energy can be harnessed by constructing a tidal barrage or tidal dam across a narrow opening to the sea. During the high tides, when the level of the water in the sea is high, seawater flow into the reservoir of the barrage and turns the turbine. Okay, the turbine then turn the generator to produce electricity. And during the low tide, when the level of the seawater is low, the seawater is stored in the barrage reservoir, is allowed to flow out into the sea. So this flowing water also turn in turbine and generate the electricity. Means जैसे ही वो turbine पे, means same sequence जैसे आपने उसमें भी देखा था हाइडल एनर्जी में, विंड एनर्जी में, तो उसमें टर्बाइन, ओके, जैसे ही टर्बाइन रोटेट होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, सेम इसमें ही होता है. ओके, सो द फ्लोइंग वाटर आल्सो टर्न द टर्बाइन एंड जनरेट द electricity. Clear this one? Limitation of tidal energy. There are very few sites around the world which are suitable for the building tidal barrage. Okay, and the rise and fall of sea water during high and low tides is not enough to generate the electricity on a large scale. Clear this one? So this is the limitation of tidal energy. Next energy is nuclear energy. A physical reaction which involves changes in the nucleus of an atom is called the nuclear reaction. So the energy released during a nuclear reaction is called the nuclear energy. Because it comes from the nucleus of an atom, that's why it is called the nuclear energy. Nuclear energy can be obtained by two types of nuclear reaction. There is a nuclear fission and nuclear fusion. Fission means क्या होता है कि इसमें ब्रेकडाउन होता है, और फ्यूजन में क्या होता है, मर्ज होता है, मीन्स ज्वाइंट होता है. ओके, सो the nuclear energy is released mainly in the form of heat. The nuclear energy is also known as the atomic energy because it can be considered, okay, to be coming from the atom. So that's why it is also called the atomic energy. Now, nuclear fission means the process in which the heavy nucleus of a radioactive atom is split. Split means breakdown. Okay, split up into smaller nuclei when bombarded with low energy neutrons is called the nuclear fission. Okay, look at here, this is the reaction of that nuclear fission. When uranium 235 atoms are, okay, bombarded with the slow moving neutrons. Okay, so the heavy uranium, ये heavy atom है uranium का, so the heavy uranium nucleus break up to produce two medium weight that atoms. Okay, इसमें barium और क्या है, krypton. Okay, so barium 139 and krypton 94. Okay, with the emission of 3 neutron, और उसके साथ में क्या emit होते हैं, 3 neutrons. Okay, and that the tremendous amount of energy is produced during the fission of uranium. So uranium जब ये heavy atom break होता है, okay, जब ये इसमें bombardment होती है, तो इसमें क्या होता है, breakdown होता है, इसमें 2 medium weight के atoms produce होते हैं, that is barium 139 and krypton 94, and 3 neutron is also emit. Okay, and tremendous amount of energy will released. Clear this one? So this fission reaction can be represented in the form of that nuclear equation. Now the energy produced during nuclear fission, अब इसमें से आपने दिख रहा है यहाँ पे बहुत tremendous amount of energy produce होती है, तो इसी energy को use किया जाता है, okay, किसके लिए, generating electricity. So this energy produced during nuclear fission reaction is used for generating electricity at the nuclear power plants. Clear this one? Now next one is that nuclear fusion. Okay, the word fusion means to join. Fission means क्या होता है, breakdown, और fusion means क्या होता है, to join.
or to combine. So the process in which two nuclei of light elements combine to form a heavy nucleus means इसमें two लाइट न्यूक्लियर कंबाइंड होकर एक हेवी न्यूक्लियस बनाता है. और फिजन में आपने क्या देखा था, एक हेवी न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होकर टू लाइट वेट न्यूक्लियस फॉर्म करता है. ओके, व्हेन ड्यूटेरियम एटम्स आर हीटेड टू एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, अब इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है अंडर ए एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, मीन्स हाई प्रेशर भी रहता है और हाई टेम्परेचर भी रहता है. देन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एंड ए न्यूट्रॉन इज एमिटेड. और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, एमिटेड होते हैं. ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, और इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड होती है. इन दिस फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन प्रोसेस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द फ्यूजन प्रोसेस. क्लियर? सो द एनर्जी प्रोड्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन हैज नॉट बीन कंट्रोल्ड सो फार. और जो इसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, सो दैट न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी कुड नॉट बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता. ओके, सो द न्यूक्लियर रिएक्शन विच ऑकर एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन. इसलिए नाउ एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. The advantages of nuclear energy are that it produces a large amount of useful energy from a very small amount of nuclear fuel like that uranium-235. मीन्स जो न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी लिबरेट होती है तो उसी एनर्जी को यूज किया जाता है. ओके, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग पर्पज. क्लियर दिस वन? एंड नेक्स्ट, वंस द न्यूक्लियर फ्यूल like uranium-235 is loaded into the reactor, the nuclear power plant can go on producing the electricity for 2 or 3 years at a stretch. So there is no need for putting in nuclear fuel again and again. And next, it does not produce gases like carbon dioxide which contribute to greenhouse effect or sulfur dioxide which causes acid rain. Clear this one? So these are the advantages of nuclear energy. Now disadvantages of nuclear energy. The waste product of nuclear fission reaction, okay, means produces the nuclear power plant, so are radioactive which keep on emitting harmful nuclear radiation for thousands of the years. और वो बहुत ज्यादा harmful radiation होती है. So it is very difficult to store or dispose of nuclear waste safely. Improper nuclear waste storage or dispose can pollute the environment. और उसको अगर properly dispose नहीं करते so it pollute the environment. Next, there is the risk of accident in nuclear reactors, especially the old nuclear reactors. Such accident lead to the leakage of radioactive materials which can cause serious damage to the plants, animals and the environment. जो उसमें से मीन्स जो वेस्टेज क्रिएट होता है मटेरियल, रेडियो मटेरियल्स, रेडिएटेड रेडिएशन, तो वो अगर प्रॉपरली उसको डिस्पोज नहीं करेगा, अगर वो लीकेज हो जाती है, ओके, तो इससे पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है, डैमेज हो जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट वन, द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम फ्यूल मेक द लार्ज स्केल यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटिव. These are the disadvantages of nuclear energy. Thank you.